Good morning, students. Today we are going to start another topic from EMI, that is self-inductance. Self-inductance means if in a given coil we change the flow of current with respect to time, यदि समय के अनुसार हम करंट को चेंज करते हैं तो करंट के चेंज होने पर इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स यदि चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो फैराडे के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली हम ये के मानते हैं कि देयर इज एनी चेंज इन फ्लक्स देन सम ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वहाँ डेवलप होगा और उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से कुछ करंट इंड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट। तो दैट इज a process called as self inductance। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, क्योंकि हम एक ही कॉइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी कॉइल में करंट में चेंजेस कर रहे हैं, उसी कॉइल में हमें फ्लक्स में चेंजेस मिल रहा है और उसकी वजह से उसी कॉइल पे एक इंड्यूस्ड करंट वापस पैदा हो रही है, वापस प्रोड्यूस हो रही है। Because you are using only one coil and that all changes are being done in that same coil, so it is called as self-inductance। Self-inductance की यदि हम बात करें तो हम find out करते हैं coefficient of self-inductance। How to get this value? Flux is directly proportional to current। Flux, magnetic flux किस पे depend करता है? current पे। यदि हम इस proportional के sign को हम equalize करते हैं तो here you have to put a value, a constant which is called L। L is called as coefficient of self inductance। क्या कहलाता है? Value or coefficient of self inductance। That means flux upon current will give you the value of L। Okay? To get the unit, यदि हम inductance की unit निकालते हैं तो वो हमारे लिए हो जाएगी, flux हम निकालते हैं वेबर में और करंट हम निकालते हैं एम्पियर में। तो दैट मीन्स द यूनिट विल बी वेबर पर एम्पियर। दिस इज वन ऑफ द यूनिट। दिस इज अ रियल वैल्यू फॉर दिस, पर ये इंडक्टेंस को हम लोग वेबर पर एम्पियर में ना निकालकर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं हेनरी में। हेनरी इज द बेसिक यूनिट फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, नाउ to initiate this, to further find this value, हम मानते हैं कि हमारे पास एक इनिशियल फ्लक्स phi1 जो इस कॉइल में था उसे हम मान लेते हैं phi1। That means according to the relation with coefficient of self inductance, phi is equals to Li। That means L into I। अब कुछ समय के बाद आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ t फ्लक्स चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि करंट चेंज हो रही है। दैट मीन्स L I plus di, there is a change in current, not in the inductance। coefficient of inductance में कोई changes नहीं आते। Hence what you will get? Li plus L di। This will be your relation according to the Faraday's second law। d phi upon dt, that is change in flux upon time is called as, that means phi2 minus phi1 upon t, that is Li plus L di minus Li upon time। This is plus minus, what you are remaining with? L di upon t। Here this difference value or the ratio of flux upon time is called as E with a negative sign। ये negative sign ये बताता है कि आपके पास जो भी रेशियो मिलता है वो अपोजिट डायरेक्शन पे होता है, जैसा हमने पिछली क्लास में लेंस लॉ में पढ़ा। Got it? तो that is called as EMF which has been produced। क्योंकि according to Faraday's law हमें ये पता है कि if there is a rate of change of flux they will create EMF। Okay? Now with the help of this particular EMF you can also find out the energy of this coil। Energy and work are the same thing। So
according to your potential relation, work is equals to potential is equals to work upon charge होता है. That means potential into charge will give you work. Hence, I am taking my potential with respect to E, that is my EMF, and Q is the charge value, that is Q. That will give you the work, and work and energy are the same thing, because whatever EMF I am getting, that is in the opposite direction, so it will be in minus. Got it? Now putting this value, minus L di upon dt into what is Q? Q is also a relation where you will get current into charge, that is I is equals to Q upon T. Q का relation निकालना है, तो I into dt is equals to Q. So what is your Q? Q becomes I dt. dt से dt cancel. That means L I di will give you the value of energy. हम इसे इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेट करते हैं इसको 0 से 1 तक, या फिर हम इसकी वैल्यू लेते हैं 0 से I तक. तो आपके लिए रिलेशन जो है वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट करेंगे I di को, तो रिलेशन विल बी एट अ रिलेशन बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन it will become minus L I square upon 2, higher limit I, lower limit 0 is equals to E. Hence, what you are remaining with? Minus L I square upon 2 is your energy, which can be written as minus half L I square. This is the total energy stored in an inductive coil. किसी भी inductive coil में इतनी total energy stored रहती है. Okay? So this is a particular relation for self-inductance. Then you talk about coefficient of inductance, self-inductance. That is flux is directly proportional to current. Proportional के sign को जब आप equalize करते हो तो that becomes, you have to put a constant, and that constant is L. L is called coefficient of self-inductance, जिसकी unit बनती है Weber per ampere. Now, change in initial and final flux will give you the value of d phi upon dt. समय के अनुसार यदि फ्लक्स में कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो d phi upon dt कहलाता है, और ये d phi upon dt हमारे लिए EMF बनाता है. That means according to the Faraday's second law. तो हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं. phi2 minus phi1 upon t is equals to Li plus L di minus Li upon t. That means plus minus cancel. You are remaining with E is equals to minus L di upon dt. This minus sign stands that if you are giving current from left to right, the EMF will be generated from right to left. This was being explained to you in your previous video, in which you had learned about Lenz's law. Lenz's law states that if whatever you are creating, whatever flux is being changes, and that change of flux will create an induced EMF which will always move in the opposite direction by which it has been created. जिसके कारण वो उत्पन्न हो रहा है उसी के हमेशा opposite वो चलता है. In that sense, we also find out the energy with respect to potential. Potential इसलिए क्योंकि जो हम EMF निकालते हैं या potential है, दोनों बातें एक, that is W upon Q, cross multiplying V into Q will give you work, minus Q into E into Q will give you energy. Substituting the value of E and Q, you are getting minus L di upon dt into I dt. dt cancel. Now integrate this value, hence you are getting with minus L I square upon 2, higher limit upon lower limit, you are getting energy. Hence the energy relation will be your L square half L square L into I square. Negative sign को हम यहाँ neglect करें. So this is what you called as self-inductant energy stored in a
पर्टिकुलर इंडक्टिव कॉइल। इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग हेनरी में फाइंड आउट करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस के कोएफिशिएंट को। ओके,